जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो हैं वो जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस थी जो हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था, आज हम उसके पास पेपर्स सॉल्व करेंगे और आज हमारा टेक्निकली सिलेबस ख़त्म करने के लिए लास्ट टॉपिक है। P2 की क्लास बेटा अब नहीं होगी। अब हम जो है वो P2 की क्लास नेक्स्ट वीक से करेंगे। कल देखें, हमारा P2 कंप्लीट हो गया, हमने उसके सारे पास पेपर्स कर लिए हैं, हर तरीके के पास पेपर्स हम उसके कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स हमने कर चुके हैं। Manahil, I haven't seen in it, I have just heard about it. If there would be anything that is different than any previous notices, I would definitely be sharing it in the group. ठीक है ना? So do not worry. जी हाँ बेटे, आज सिर्फ जो है वो P1 की क्लास होगी, आज P2 की क्लास नहीं होगी। So alright, so let us start. An alarm clock is controlled by a microprocessor. It uses, sir, will you teach PRM again anywhere? There are loaded lectures. आप everywhere हर जगह आपके पास है, लेकिन अभी जो है ना आपकी सब्सिक्वेंट जो क्लासेस हैं उसी में होगा, जो क्लास का शेड्यूल है। I will update mock schedule in your respective groups. If it is not there yet, it means that it is not for tomorrow. If it is there, then it will be tomorrow. Okay, so I'll update it. So let us start. Okay, Zuhaib, do post it in the group. Okay, I will guide you towards that. Okay. An alarm clock is controlled by a microprocessor. It uses 24 hours clock. The R is represented by an 8-bit register A. 8-bit register A, and the number of minutes is represented by another 8-bit register B. The liquid crystal display on the clock face is backlit using LEDs, light emitting diodes. The brightness of the clock face is determined by the level of light in the room. The amount of light given out by the LEDs is controlled by the control socket. Describe how sensors, microprocessor, and LEDs. This is monitoring and control question. All right, this is just 3 marks question, so we don't have to write a lot. So, as I said, such questions are very commonplace. They will always appear. So you have to be actually very much prepared for it. So we have got sensor acquires data from the environment, it sends it out to the microprocessor. Since the data is in analog form, it is converted using ADC into digital form, analog to digital converter, then it reaches out to the microprocessor. Microprocessor checks it against the preset value so that if the data is within the limit or beyond the limit, and also stores it over the storage. So this is called storage, and this is called logs. It logs it. This thing goes on and on and on, and this is called monitoring. When there is also control, processor generates an order, but that order is in the digital form. तो वो जो digital form है उसको फिर हम
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा के कन्वर्ट करते हैं और फिर एक्चुएटर से, जो कि किसी मशीन का पार्ट है जो इन्वायरमेंट में डिफरेंस लेकर आ रहा है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। अब यही चीजें आपको अपने क्वेश्चन में लिखनी है। अब सेंसर कौन सा होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इट यूजेस अ लाइट सेंसर, ठीक है, इट यूजेस अ लाइट सेंसर, sends signal, the sensor sends signal to microprocessor, उसके बाद signal is converted to digital form using analog to digital converter. Okay, value, I mean the digital value is compared with the preset value, ठीक है ना, preset value। इसके बाद if the value is less than the stored value, if the value is less than the preset value, then LED is adjusted accordingly. LED over here is the actuator. All right, so this question is going to appear so many times that you should learn it properly. Achha. Modern LCD monitors and televisions use LED backlit technology. Give two advantages. हमने ये पढ़ा था कि it doesn't appear slowly. It doesn't get it does not get warm up. Rather, it just shows the brightness right away. All right. So show brightness fast, more vivid colors in LED, lighter, durable as in long lasting, and consumes less power. Okay, these are the advantages of LED over LCD as we discussed last time. A street light is controlled automatically, a light sensor in the microprocessor. This is again the same sort of question that you would have to actually answer. Same sort of question. Okay. Street lighting is controlled automatically, a light sensor and a microprocessor are used to decide when to switch each street light on and off. So it is again monitoring control because there is a street light which is bringing change in the environment. ठीक है ना? So describe how the sensor, microprocessor and light interact to switch the street light on and off. Include in your answer how the microprocessor stops a street light being frequently switched on and off due to brief changes in the light intensity. ठीक है ना?
तो अब इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे कौन सा सेंसर यूज करेंगे? हम यहाँ पर सेंसर यूज करेंगे लाइट सेंसर। लाइट सेंसर captures data from environment. It sends data to microprocessor. Data first is digitized using ADC. Microprocessor compares the value with preset value. देखें ये ना बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। If the value is less than set value, microprocessor lights the street light. अच्छा, lights the street light means the street light is switched on. अच्छा, now you have to tell that if there is frequent change in environment light, then microprocessor waits for a predetermined time before changing the status of स्ट्रीट लाइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट करो बादल आ रहे हैं, लाइट कम ज्यादा हो रही है और वो तेजी से आ रहे हैं और गुजर रहे हैं, तो ये थोड़ी होगा कि वो टक 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 ऑन ऑफ करता रहेगा। रादर ये होगा कि एक बार अगर ऑन हो गया तो फिर वो लेट से 5 मिनट 10 मिनट के लिए उसको ऑन ही रखेगा, उसके बाद ऑफ करेगा उस वक्त की सिचुएशन देख के और उसके बाद करेगा। फिर आप लिख सकते हैं कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये चलता रहेगा मुसलसल। ठीक हो गया? तो ये इस तरह का सीन है। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास लेजर जेट प्रिंटर की वर्किंग है और इसमें हमें जो है वो स्टेप्स बताने, ऑर्डर हाउ इट विल वर्क, और ये एक मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास जो एक क्वेश्चन में आ सकते हैं वो 8 होते हैं और उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता। दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन। तो आप देखें, इट सेज the printer driver ensures that the data is in a format that the laser printer can understand. इसके बाद होगा data is then sent
to the laser printer and stored temporarily in the printer buffer. उसके बाद होगा the printing drum is given a positive charge, and then as the printing drum rotates, a laser scans through it. This is fourth. A printing drum rotates, a laser scans across it. This removes the positive charge in certain areas. And then we have last one. Negatively charged areas are then produced on the printing drum. These match exactly with the text and images to be printed. Okay, to be printed. And then we have the printing drum is coated in positively charged toner. This then sticks, this toner is ink. This then sticks to the negatively charged parts of the printing drum. Then a negatively charged sheet of paper is then rolled over the printing drum. The toner on the printing drum is now transferred to the paper to produce the required text and images. The paper goes through the fuser, which melts the toner so that it fixes permanently to the paper. So that is what your answer should be, and you need to be very much clear about the concept so that you could answer such questions. ये बहुत easy है. अगर आपका concept clear है तो ये questions बहुत easy होते हैं. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन से किस्म की जो आउटपुट डिवाइस है वो बेहतर होगी यहाँ पर. अच्छा, जिस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो इंकजेट प्रिंटर है वो बेस्ट होता है फोटोज प्रिंट करने के लिए. जी हाँ, तो इंकजेट प्रिंटर so production of one of photographs of one of का मतलब है एक, बस एक ही प्रिंटर. हाई वॉल्यूम कलर प्रिंटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग फ्लायर, तो ये इसके लिए बेहतर होगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है. लेजर जेट. प्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज बिल्ट अप लेयर बाय लेयर. जब भी लेयर बाय लेयर बिल्डिंग की बात आएगी तो दिस इज 3D प्रिंटर यूज्ड इन कैड एप्लीकेशंस. Converting electric signals into sound. Converting electric signals into sound. तो जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और जो स्पीकर होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड. Show enlarged computer output on the wall or large screen. So this is basically projector. ठीक है. अच्छा, अब ये कहता है Nikita wishes to print out some documents and connect her printer to the computer using the USB ports. State one suitable application for each printer below. Inkjet printer. इसमें क्या है? फोटोग्राफ्स आप प्रिंट कर सकते हैं. A different application है फोटोग्राफ्स प्रिंटिंग. और दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग, लेकिन लेस क्वांटिटी. ठीक है ना. 3D प्रिंट.
तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 3D प्रिंटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं मॉडल्स, 3D मॉडल्स, और इस पे हम कह सकते हैं कि 3D मॉडल्स और प्रोटोटाइप्स भी कर सकते हैं। प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका आइडिया बनाना पूरा। तो आप यहाँ पे बता देते हैं कि प्रोटोटाइप प्रिंटिंग, 3D मॉडल्स भी प्रिंट कर सकते हैं और प्रोटोटाइप मतलब किसी चीज को बनाने से पहले उसको अगर आप दिखाना चाहें कि ये बन के ऐसी नजर आएगी, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेम अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर और डिस्क्रिप्शन भी उसकी फिर आपको बतानी है। तो हमारे पास एक अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर इज लेजर प्रिंटर या लेजर जेट प्रिंटर। तो अब इसमें हमें इसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। सर कैन यू एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ 2D एंड 3D स्कैनर्स। बेटा स्कैनर जो होता है ना, 2D स्कैनर तो हम उसको कहते हैं जैसे हमारी फोटोस्टेट मशीन होती है, घरों वाले फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं कि आपने उसमें पेपर रखा और उसमें उसको स्कैन कर लिया लाइन बाय लाइन। 3D स्कैनर जो है वो सिर्फ 2D नहीं करता। 2D का मतलब है विड्थ और स्प्रेड। 3D प्रिंटर जो है वो लेजर से स्कैन करता है और वो हाइट, विड्थ एंड डेप्थ तीनों स्कैन करता है ताकि आप उस मॉडल को फिर 3D प्रिंटर के अंदर एक्चुअली प्रोड्यूस कर सकें। तो जो फोटोस्टेट होती है, जो हमारे घर वाले स्कैनर्स होते हैं घर में जो होते हैं, या जो कैम स्कैनर्स होते हैं, ये 2D प्रिंटर्स होते हैं या फ्लैट बेड प्रिंटर्स कहलाते हैं। जबकि जो 3D प्रिंटर्स होते हैं वो डेप्थ को भी प्रिंट वो करते हैं, मतलब विड्थ, हाइट एंड डेप्थ तीनों को स्कैन कर सकते हैं। लेजर प्रिंटिंग यूज करते हैं। बस आपको ना इससे ज्यादा लिखना नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन एक वर्ड आता है लेंसेज एंड मिरर्स। जब लेंस एंड मिरर का वर्ड आएगा उसका मतलब है 2D प्रिंटिंग की बात हो रही है। जब आएगा विड्थ, हाइट और डेप्थ, एक्स, वाई और जेड या 3 डायमेंशंस, तो फिर वो 3D स्कैनर की बात होगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है। इट यूजेस toner ink, all right. It uses rotating chargeable drums. It uses rotatable chargeable drums, static charges। अच्छा, ये सिर्फ 3 मार्क्स का है, इसलिए आपको ज्यादा लिखना नहीं है। Faster printing, it has application in faster printing. It has in high volume printing. और that's it, ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। अच्छा जी, allows a user to write on the surface। देखें हमारे पास writing on the surface के लिए सिर्फ एक ही डिवाइस है, टच स्क्रीन। यहाँ पे हमारे पास writing of the surface के लिए नहीं है। जो अगर आपसे कहा जाए कि you can hang it on a wall, ठीक है ना, या आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड ही होता है। ठीक है। अच्छा जी, कन्वर्ट साउंड इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। ऑब्वियसली साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने वाली जो चीज है वो है माइक्रोफोन। उसके बाद आता है यूजेस थर्मल बबल एंड पीजो इलेक्ट्रिक। थर्मल बबल एंड पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब है कि ये आपके पास इंकजेट प्रिंटर है। अच्छा, यूजेस अ ब्राइट व्हाइट लाइट एंड माइक्रो मिरर्स। जब ये माइक्रो मिरर्स की बात आती है तो डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर की बात आती है। ये आपको कीवर्ड्स के साथ मिला के लिखना पड़ेगा। तो राइट ऑन सरफेस, साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मल बबल, पीजो इलेक्ट्रिक, माइक्रो मिरर्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स।
converts a hard copy document into an electronic form. Converts a hard copy document into an electronic form is basically 2D scanner. और इसके बाद uses negatively charged image rotating drum. जो rotating drum का word है, rotating drum का मतलब है कि बस वो लेजर प्रिंटर, ठीक है. Modern LCD monitors using light emitting diodes, backlit technology. तो LED के चार आपको फायदे बताने. अभी हमने ऊपर ये किया हुआ है. मैंने आपको बताया था maximum brightness appears right away, fast. Colors जो है more vivid colors हैं. Consumes less electricity. और लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है. थिनर है, लाइटर है, इस तरीके से, ठीक है ना. अब आ जाए इधर. Flat panel display that uses light modulating properties of liquid crystal display. So this is LCD. Liquid crystal display, crystals, liquid crystals. Flat panel display that uses array of light emitting diode, LED. Droplets of ink, inkjet printer. Electricity charged powered ink, charged ink, laser. High power laser that uses XY planes. High powered laser here. This is 2D cutter. XY के बजाय Z होता तो फिर हम कहते 3D cutter. अच्छा, अब देखें, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा. 9th. A cold store is kept at the constant low temperature using a sensor. तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर चाहिए. एंड कूलिंग यूनिट. ये कूलिंग यूनिट क्या है? ये हमारा एक्चुएटर है. अब वही सीन है, वही सेंसर है, वही एडीसी है, वही प्रोसेसर है, वही लॉक करेगा, वो प्रीसेट वैल्यू के अगेंस्ट चेक करेगा, वो करता रहेगा. जब वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से ऊपर चली जाएगी तो फिर वो कूलिंग यूनिट को ऑन कर देगा, लेकिन उसमें फिर वो डीएसी इस्तेमाल करेगा. ये क्वेश्चन इज अ नेसेसरी क्वेश्चन. तो मैं आपको बता देता हूँ, चलें यार. A temperature sensor will be used, the data will be analog and it will be converted using ADC. Sensor sends signal to the microprocessor. Microprocessor compares the values with the stored value, preset value. If the temperature value is high than the preset value, a signal from the microprocessor to switch on the cooling unit will be sent, but that signal will be converted into analog form first. If the temperature matches the required temperature or it is less than it, then no action will be taken. The actuator will be used to turn on and off the cooling unit here, or it is a continuous process. A washing machine has a display. So state whether the display screen is an input, output, or storage device. So obviously this is output device. A factory uses security system to control the security light. देखिए ये question बार बार appear हो रहा है. अच्छा, अब control, तो सिस्टम यूजेस अ सेंसर. अब देखें, सिक्योरिटी का सेंसर है ना, तो ये आप इसको मोशन सेंसर भी लिख सकते हैं और इंफ्रारेड सेंसर भी लिख सकते हैं. एंड अ माइक्रो प्रोसेसर.
ठीक है ना। तो जो लाइट है, सिक्योरिटी लाइट है, ये एक्चुएटर चलाएगा या ये खुद एक्चुएटर होगी, आप इसको जो दिल चाहे बोलें। खुद एक्चुएटर बोल रहे हैं तो वो भी चलेगा, और वो भी, अगर लाइट को आप एक्चुएटर बोल रहे हैं तो वो भी चलेगा, और कोई एक्चुएटर है जो लाइट को चला रहा है तो वो भी चलेगा। तो a motion sensor will be used, data will be converted from analog to digital form using ADC. It will be sent, the data will be sent to the microprocessor. Data will be compared against the preset value. If the data is out of range, it is above range, it is beyond range, then the light will be switched on. And then the system will wait. When there is no motion appears, then the light will be switched off. It will be a continuous process. ठीक हो गया? 6 marks. Karina is taking her computer science exam. She has 3 questions to answer about output devices. For the first question, she writes the answer. It is a high-powered laser. High-powered laser cuts materials such as thin. So, आप word on that, which is cutting. It is 2D or 3D cutter. अब आप इसको 2D लिखेंगे तो वो भी सही होगा, 3D लिखेंगे तो वो भी सही होगा. The screen is made up of block of red, green, and blue pixels. The screen uses layers of different types of liquid. Layers of liquid. This is LCD. Liquid crystal display. Acha. It is responsible for powering and moving. Now you see, powering and moving. This is actuator. A motor in the machinery, such as robot arm. Now, an inkjet, no, and dash allows the user to write on surface. So, okay, मैंने आपको क्या बताया था? This is interactive whiteboard. An interactive whiteboard allows a user to write on the surface using a pen. Dusra, and dash N means inkjet. An inkjet printer produces a hard copy of a document using dash or and piezoelectric technology. Thermal bubble. Thermal bubble and piezoelectric technology. A dash printer, a laser jet printer. Uses a dash rotating drum. These are the keywords. You would have to actually remember these words. Drum and positive and negative charges to produce a hard copy. So you get 5 marks for it. A system uses pH sensors and microprocessor to help monitor pollution in the in the river, sorry. The pH of the water should be between 6 and 8. pH of the water between 6 and 8. The system outputs an alert if the pH of the water is not in this range. Explain how the system uses pH. अब देखिए वो same question है. The pH sensor will send the data to the microprocessor. Data will be converted to the digital form using ADC. The microprocessor compares the reading from the sensor with the value, preset value. If the reading is less than 6 or greater than 8, in that case, the microprocessor sends a signal to alert over the monitor. The process is continuous. It is a continuous process. Okay. Uses high intensity beam. Uses high intensity beam of light shown through 3 layers. This is LCD. Millions of micro mirrors, DLP,
Uses plastic resin or powdered metal to generate. This is a 3D printer. Uses static electric charge on the rotating drum. This is laser jet. Uses liquid inkjet. Uses a high power laser to generate physical output, 2D cutters. All right. Pay attention to keywords. Now, this is an input device that works. This is an input device that, sir, can multiple sensors be used, such as acoustic pressure? Yes, beta, they can be used, but you would have to actually just tell about one. Okay. अब जो आखिरी वाला सवाल था उसके अंदर ये इट्स अप टू यू, सूटेबल सेंसर आपको बताना है। जब उसने खुद कुछ नहीं बताया, कोई हिंट नहीं दी, तो आप सूटेबल सेंसर कोई सा भी ले सकते हैं। This is an input device that works by shining a light onto the surface of a document. This is 2D scanner. The light source is automatically moved across the document and the light is captured using mirrors and lenses. Remember? Mirrors and lenses. I told you. Manail. This is an input device where a laser or light source is moved across the object. The width, height, and depth. This is 3D scanner of the object are measured. This is a large input device that is fixed to a wall. This is interactive whiteboard. This is an output device that uses many small mirrors. This is क्या था? DLP, digital light projector. Mirrors to reflect the light towards the lens. This is an output device, or it can be a projector if you like. This is an output device that creates an object building layer upon layer. This is 3D printer. Okay, this is 3D printer. Input devices are often connected to personal computer. Identify 3 output devices that can be connected to the personal computer. Now you have got monitor, printer, speaker, laser printer, inkjet printer, inkjet printer, DLP, or LCD projector, whatever that comes to your mind, that is fine. Marley prints the images of his project using inkjet print. Describe how inkjet printer prints. So inkjet printer, how inkjet printer prints. अच्छा, इसके अंदर वो कटर्स वटर्स भी आ सकते हैं, 2D कटर्स, 3D कटर्स, जो भी मैंने आपको वो पढ़ाई है ना आउटपुट डिवाइसेस, और इसमें वो भी तो है, एक्चुएटर भी तो एक आउटपुट डिवाइस होती है, एक्चुएटर। अच्छा, अब हमें बताना है कि हमारा जो इंक जेट प्रिंटर है वो कैसे काम करता है। तो इंक जेट प्रिंटर वर्किंग, inkjet printers working. Stepper motor is used to move paper line by line. All right. Nozzles
spray liquid ink droplets on paper. Print head moves across the paper in a line. Different colors are used to produce required shade. They may be using piezoelectric or thermal bubble technology. ठीक है, ये आपको लिखना. An office has automatic. An office has an automated light system when the movement is detected. The office lights are switched on. If movement is not detected for a period of 2 minutes, lights are switched off. The system uses sensors and microprocessor. ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. Okay. Output devices जो हमें चाहिए बारकोड सिस्टम में, दो आउटपुट डिवाइस. Monitor, it might be touch screen, speakers, barcode readers, printers, etc. Describe how an LCD screen operates to display this data. ये मैंने ऊपर आपको समझाया था कि LCD screen कैसे काम करती है. So, if we write, the display is made up of pixels. Those pixels has 3 filters, 3 layers: red, blue, and green. Light shown through these layers, red, blue, and green, and finds its shade, which will be then shown using the pixel. The screen is backlit using lamps. Using lamps, there are 2 lamps mostly. These liquid crystals might become opaque to not let light through, or transparent to let the light through them. That is how the LCD screen works. An image of the smartphone is shown. Identify 2 output devices for the image of this smartphone. We have a speaker and touch screen. आपको पता है कि touch screen जो है वो
इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी है. Benny is a photographer. Ben is printing some photos and papers get jammed in the printer. A signal is sent to alert computer about the paper jam. This is interrupt. When there is a signal to tell the microprocessor that there is something needs to be done, it is said to be interrupt. Identify one benefit and two drawbacks of inkjet printer. One benefit: prints photographs best. Cheaper है, consumes less light. Two drawbacks: not durable and slow. Now we have to tell that what sort of printer we are talking about. Uses a rotating drum to transfer the image, laser. Use powder toner, laser. Use nozzles, inkjet. Use a print head, inkjet. Laser does not have any inkjet, head. So can we write that ink cartridges are less expensive? Yes, you can write. You can write. They are less expensive, Ali, लेकिन मसला ये वो प्रिंटर से महंगी होती है, प्रिंटर सस्ते होते हैं. अगर आप 5,000 का प्रिंटर लेंगे ना तो 7,000 की टोनर आएगी, लेकिन आप उसको रिफिल कर सकते हैं. So state two benefits and one drawback of laser printer. Two benefits: fast, can do bulk printing. Durable है, long lasting है. Drawback: consumes more power. और expensive है. तो जनाब हमने 2015 से 2020 तक whatever questions that we had, we completed them. So this marks the end of P1's all topics along with the past papers. There is none of the topic where I have not solved past papers. Every topic was accompanied with past papers, topical past papers. Is it compulsory to write answer in points? Yes, it is. That is the best way of putting up answers. You have seen through all these 5 years questions that I have written everything whenever I had that was in points. अरे भाई किधर गया? ये देख, पॉइंट्स में लिखता हूँ, पॉइंट्स में ही लिख. हमें खुद सिखाया गया कि आप जो है वो पॉइंट्स में लिखवाएं अपने स्टूडेंट्स को बोले, लेकिन दिस इज फॉर जस्ट कंप्यूटर्स, ओके? सो डू नॉट एक्चुअली. सो इसी तरीके से हम लिखते हैं. पॉइंट्स में लिखना जरूरी है, पॉइंट्स में लिखना एक अच्छी बात है, और इसमें फायदा ये होता है कि आप एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के दोबारा नहीं लिखते.